वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। जितना भी अभी हमारा डिस्कशन है इट इज़ फॉर पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पैराबोला। तो फर्स्ट वी डिस्कस की व्हाट इज़ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब भी पैराबोला पर आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, दीज आर दी टेंजेंट्स जो पैराबोला को टच करके हुए जाएंगी। लेट सपोज दिस पॉइंट बी x1, y1। तो ये दोनों जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं Q एंड दिस पॉइंट R, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला ये जो कॉर्ड ऑफ पैराबोला होगा, दिस कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड chord of contact. This is our chord of contact. And now if we take equation of parabola y square equals to 4ax, our standard parabola. So for this parabola, equation of chord of contact is t is equal to 0, t for tangent। t यहाँ पर सिंबल है टेंजेंट के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो सेम इन सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला ऑल्सो, बिल्कुल सेम सिंबल है। t फॉर टेंजेंट लेना है, मतलब इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो आप ये जानते हो दैट मीन्स टेंजेंट का इक्वेशन x1 y1 पॉइंट पर पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए टेंजेंट की इक्वेशन होती है। y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से, और 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से। सो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड नाउ दिस इज द chord of contact. This is our chord of contact. So the equation of chord of contact is t बराबर 0. This is our heading. Now here we discuss the length of chord of contact. Length of chord of contact. लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को हमने QR नाम दिया है, एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज 1/mod A एंड द स्क्वायर रूट ओवर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट में है, कंप्लीट। दिस इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट QR। ये QR का जो लेंथ है इट इज दिस। नाउ ऑल्सो the area which is formed by these tangents and the chord of contact, that means the area of triangle PQR। तो ये जो triangle PQR आपको दिख रहा है which is made by chord of contact and the tangents. So this area of triangle PQR is
1 upon 2a y1 square minus 4ax1 whole power 3 by 2. This is the area of triangle PQR. 1 upon 2a y1 square minus 4ax1 whole power 3 by 2. Now we verify this length and area. How we find the length of chord of contact and the area of chord of contact. तो फर्स्ट वी फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. सबसे पहले हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का लेंथ निकालेंगे. हाउ वी फाइंड द लेंथ. सो फॉर लेंथ ऑफ QR, लेट पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 ले लिया एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर वी सपोज दैट x3 y3, x2 y2 and x3 y3. Since both points lies on the chord of contact, so therefore they satisfy the equation of chord of contact. This is our equation of chord of contact. इसको satisfy करेंगे. So now we put in place of y we put y2 and in place of x we put x2. So we get another equation. y2 y1 is equal to 2a x2 plus x1 and similarly y3 y1 is equals to 2a x3 plus x1. These are the two equations. Now if we subtract these two equations, यदि आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, so we get y2 minus y3 is equal to 2a x2 minus x3. So therefore the value of y2 minus y3 is equal to 2a upon y1 x2 minus x3. We get another equation, equation number 2. Now the distance formula say we calculate the distance between Q and R. So distance formula between Q and R is y2 minus y3 का square plus x2 minus x3 का square. This is the distance formula. Now we put the value of y2 minus y3 in this equation. So after putting this, we get x2 minus x3 common and square root over 4a square upon y1 square plus 1, which is equal to x2 minus x3 upon y1 into square root over 4a square plus y1 square, 4a square plus y1 square. Now we get another equation 4. Now we find the value of x2 minus x3. How we find x2 minus x3? We have to find the x2 minus x3. So since the chord of contact intersect the parabola, so we solve the equation of parabola and the chord of contact simultaneously. Therefore we put the value of y here. So for finding value of x2 minus x3, we put the we put the value of in the
इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सो y1 का वैल्यू है 2a upon y1 x plus x1. This is the value of y, putting in the equation of parabola 4ax. So we get the quadratic equation. देखिए what we get, if we squaring both side, 4a square upon y1 square x plus x1 whole square. This is 4ax. Now 4a cancel हो जाता है and we get x plus x1 whole square is equals to x into y1 square upon a. Now solving this, ax square 2ax x1 plus x1 square minus x y1 square equals to 0. We get this equation. Now we get the quadratic equation, ax square plus 2ax1 minus y1 square into x plus x1 square. Since x1 and x2 are the roots of this equation, therefore the difference between roots x2 minus x3, difference between roots ये आप जानते हैं, it is root d by a. Now we calculate root d, which is b square minus 4ac upon a. A is here a. Now if we simplify this, so we get 4ax1 square cancel आउट हो जाएगा. इसको जब भी आप ओपन करेंगे, सो बी गेट y1 पावर 4 माइनस 4ax1 y1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो वी गेट y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 upon a. This is the value of x2 minus, this is the value of x2 minus x3. Now from equation 4, the value of qr is x2 minus x3 upon y1 का वैल्यू आता है 1 upon a square root over y1 square minus 4ax1 and into 4a square plus y1 square, and finally we get the equation, the length of chord of contact is 1 upon a y1 square minus 4ax1 into y1 square plus 4a square. This is our length of chord of contact. This is our length of chord of contact. तो एक बार रिवाइज करेंगे. देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी आप दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट and its equation is t बराबर 0, which is the tangent y1 2a x plus x1. Now the length of this chord of contact is 1 upon mod a y1 square 4ax1 into a1 square 4a square, and the area of triangle PQR is 1 upon 2a y1 square minus 4ax1 whole power 3 by 2. How we find this length QR, chord of contact कैसे निकालेंगे? तो फर्स्टली वी पुट द कोऑर्डिनेट्स Q और R का कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया है. सो हमने Q और R के कोऑर्डिनेट के बाद वी गेट अ रिलेशन दिस. नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी गेट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ओनली x2 x3. नाउ वी फाइंड ओनली x2 x3, x2 माइनस x3. हाउ वी फाइंड x2 माइनस x3? सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन पैराबोला के साथ सॉल्व करा है. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन पैराबोला के साथ करेंगे, सो वी गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंस बिटवीन रूट्स रूट डी बाई ए, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x3.
putting this value in QR, so we get the length of QR. Thank you so much.